अगर से आप लोड वर्सेस सेटलमेंट एक डायग्राम बनाएंगे किसका, जनरल शेयर फेल्योर का, तो ये सेटलमेंट है, ये लोड है। पहले लोड लगाओ कुछ नहीं होता, फिर और लोड लगाओ कुछ नहीं होता, धीरे 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 सेटलमेंट बढ़ता। सो वेन एवर यू अप्लाई द लोड, अगेन सेटलमेंट विल इंक्रीज, अगेन यू अप्लाई द लोड, अगेन सेटलमेंट विल इंक्रीज। So it will come up to a particular point, maximum load। और इसके बाद क्या होता, आप लोड अप्लाई करो या ना करो, सेटलमेंट अपने आप होना शुरू हो जाता। ऐसा थोड़ा सेटलमेंट ऑफ कोर्स कम होता, लेकिन एक कंटिन्यूस नीचे की तरफ होता। सो दिस इज, मतलब क्या है, जनरल शेयर फेल्यूर में आपको वेल डिफाइंड पॉइंट मिल जाता है मैक्सिमम लोड का। This you will get in case of general shear failure. This you will get in case of general shear failure, which is not possible in case of local shear failure or कौन सा, punctual shear failure। So this is the failure surface। तो फेलियर सरफेस बिल्कुल वेल डिफाइंड है। आप जैसा ज्योमेट्रिकल ड्राइंग एग्जैक्टली इतना प्रॉपरली ट्रायंगल नहीं बनता, या इतना ऐसा ही ऊपर ऐसा फिगर, इतना ये थ्योरेटिकली है, हम रिसर्च करने के लिए काम, ये ऐसा बनते, देखिए ऐसा अप्रोक्सीमेट, ये जरा नीचे की तरफ आता, हम उसको नीचे थोड़ा हो गए तो उसको ट्रायंगुलर शेप बनाते, उसको ट्रायंगुलर बनाते, उसको ऐसा, मतलब ये फील्ड का है। और हम जब डिराइव करते कोई चीज, कोई फॉर्मूला या कोई रिसर्च, वी विल टेक लाइक दिस ओनली, we will take in this form only। So this is the general failure surface। Okay, so I will explain a little bit more। तो ये आपको फिगर क्लियर हो गया ना, दिमाग में आ गया जनरल शेयर फेल्यूर कैसा रहता। और ये लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व है। देखिए आप लोड अप्लाई करो, शुरू में सेटलमेंट कुछ नहीं रहता, फिर जरा लोड अप्लाई करो, फिर भी सेटलमेंट नहीं होता, और थोड़ा लोड फिर नहीं होता, लेकिन बाद में लोड अप्लाई करते ही थोड़ा सेटलमेंट हो जाता, और लोड अप्लाई करो थोड़ा और सेटलमेंट बढ़ता, फिर लोड अप्लाई करो सेटलमेंट बढ़ते जाता, फिर लोड अप्लाई करो सेटलमेंट बढ़ते जाता, लोड अप्लाई करो फिर सेटलमेंट बढ़ता, एक अप टू लिमिट तक बढ़ता, up to a certain limit। whenever you apply the load, there is increase in settlement, and you will get a particular point there, you will get a particular point, this is the called maximum load। इसके बाद आप लोड चाहे जितना भी डालो, सेटलमेंट थोड़ा कम होते हो, उसके बाद लोड डालो या ना डालो, सेटलमेंट तेजी से अपने आप होना शुरू हो जाता। आपका डायग्राम ये सेटलमेंट कैसा नीचे की तरफ आता। So this is the load versus settlement curve for the general shear failure। This is the load versus settlement curve for general shear failure, and this is the well-defined figure for general shear failure, well-defined figure for general shear failure। Okay, so some handwritten notes I have made here, I will explain you what is general shear failure। So in the case of general shear failure, continuous failure surfaces develop between the edges of the footing and the ground surface as shown in figure। Of course you have seen the figure। When the pressure approaches the value of QF, the state of plastic equilibrium is reached initially in the soil around the edges of the footing। Of course, when you apply the load after the triangle elastic zone, the plastic equilibrium will start, so it spreads downwards and then it goes outwards, downwards फिर outwards होके ultimately the state of plastic equilibrium is fully developed throughout the soil above the failure surface। वो अब तक मैं आपको बताया। So this is nothing but whatever the things I have explained you in the figure, same thing is this type of failure seen in dense sand। सैंड अगर है तो मतलब डेंस होना चाहिए। जनरली सैंड मतलब आप पूरा लूज सैंड लेंगे तो नहीं, थोड़ा डेंस टाइप का है तो इट्स ओके, और स्टिफ रहना पड़ता है। क्ले अगर से है तो आपका स्टिफ होना पड़ता है। तो आपको मालूम है ना, सैंड इज कोहेजनलेस whereas क्ले इज कोहेसिव। अगर से आपको इफ यू वांट टू सी दिस टाइप ऑफ फेल्यूर, जनरल शेयर फेल्यूर, देन द सैंड शुड बी डेंस एंड क्ले शुड बी स्टिफ। Clay should be stiff, it will take in such type of soils only। And what are the different characteristics that one by one you see here? Continuous well defined and distinct failure surface develops between the edge of the footing and ground surface। ground surface में और footing के बीच में आपको एक रेडीमेड बेहतरीन खूबसूरत पिक्चर आ जाता, एक ट्रायंगल रहता, फिर दो स्पाइरल्स रहते, फिर ऊपर ग्राउंड की तरफ जाता। सो ये वेल डिफाइंड पिक्चर आता आपको। दिस इज इन केस ऑफ जनरल shear failure only।
This is in case of general shear failure only. Okay, then dense or stiff soil that undergoes low compressibility experiences this failure. मतलब कॉम्प्रेशन ज्यादा नहीं कम रहा और डेंस रहा सैंड और स्टिफ रहा, मतलब सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स अगेंस्ट सेटलमेंट ये थोड़ा अच्छा रहता कंपेयरिंग टू लोकल शेयर फेल्यूर एंड पंच्ड शेयर फेल्यूर. So you will get dense or stiff soil that undergoes low compressibility experiences this failure. तो ये किस मतलब पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया आपको कि इट इज हैविंग वेल डिफाइंड पिक्चर in between base of the footing and ground surface. You will get a triangle, then two spirals, then two triangles again, and sometimes it goes beyond above the ground level also. Okay, that is a continuous and well defined figure है यहाँ पर failure का. और दूसरा, this will take in case of dense sand or stiff soil. This case in case of dense sand or stiff soil. Okay, continuous bulging of shear mass adjustment of footing is visible. Of course, whatever the soil is bulging coming upwards, that is visible in this figure. Failure is accompanied by tilting of footing. Of course, because of this some tilting of footing will take. Failure is sudden and catastrophic with a pronounced peak in P delta curve, means P is load, delta is settlement. तो ये failure sudden है, and when you draw the load versus settlement curve, you will get a peak point. There's the maximum load, वहां पर आपका maximum settlement बनता है. एक particular point मिलता है. You will get a particular point. This you cannot find in case of local shear failure and punched shear failure. When you draw the graph of load versus settlement curve in case of local shear failure and punched shear failure, you are not going to get it. So when you draw the load versus settlement curve in general shear failure, so you will get a particular point where up to that the maximum settlement for that load, the maximum settlement will takes place. For that load, the maximum settlement will takes place. Got it? Beyond that, even if without applying the load also, the continuous settlement will takes place. Continuous settlement will takes place. The length of disturbance beyond the edge of the footing is large. Beyond, of course, the length of disturbance is large. So punch list में क्या होता है, कुछ disturbances नहीं है, straightly sink होते जाता था. State of plastic equilibrium is reached initially at the footing edge and spreads gradually downwards and outwards. Of course, at the base of the footing, plastic equilibrium एक बार triangle बन गया, plastic equilibrium start होता, और once it start the plastic equilibrium, after starting the reaching that one, it star comes downwards, spreads downwards, and then it goes outwards. Outwards. Got it? Then the next thing is general shear failure is accompanied by low strain. Of course, low strain रहा 5% से कम रहा तब ही general shear failure लेता. तो इस पॉइंट के बारे में when I teach you what is local shear failure, you will come to know. You can compare. जनरल shear failure के लिए strain कितना रहता, फिर local shear के लिए कितना रहता. These things you should know. Okay, so general shear failure is accompanied by low strain, that is less than 5% in a soil with considerable phi, that is phi is greater than 36 degrees. 36 degrees से ज्यादा रहा तो ही जनरल shear failure रहता. Phi is what is phi? Do you know this? C and phi, these are shear strength parameters. C is cohesion, phi is angle of shearing resistance. So for general shear failure, याद रखो, strain is always less than 5 degrees. For general shear failure, strain is always less than 5%, and angle of shearing resistance is greater than 36 degrees. Because formula for general shear failure, formula for local shear failure are different. So when you solve the problems, you should be perfect whether it is general shear failure or local shear failure. You should be perfect whether it is general shear failure or local shear failure. So general shear failure is accompanied by low strain, that is less than 5% in a soil with considerable phi. The phi is greater than 36 degrees, and large n. N मतलब क्या है आपको? ये सब SPT करे तो number of blows. So number of blows is greater than 30, having high relative density greater than 70%. High relative density क्या है? ये भी definition देखो आप. E maximum minus
E minimum divided by E minus E minimum, something when giving the relation of White's ratio, it is given to you. So general shear failure K, स्ट्रेन कितना रहता, लेस देन 5%, एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस कितना रहता, ग्रेटर देन 36 डिग्री, नंबर ऑफ ब्लोज एन कितने रहते, 30 से 30 से ज्यादा रहते, और रिलेटिव डेंसिटी आईडी कितना रहता, ग्रेटर देन 70% रहता. अगर से आपके ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, so then we can decide that this is the general shear failure. This is the general shear failure. So general shear failure is accompanied by low strain, considerable phi, that is phi is greater than 36 degrees, and large n, so n is greater than 30 degrees, n is greater than 30 here, and high relative density. So density is here greater than 70%. अब local shear failure में क्या रहते, when I start the local shear failure, I will tell you what is the strain there, what is the angle of shearing resistance there, what is N there, and what is relative density there. I hope general shear failure is very much clear to you. Also in the next class, I will take what is local shear failure, and then what is characteristics of local shear failure, what is punched shear failure, then what are the differences between these two. A table I have made you. This is very much useful for exams. यहाँ पर देखिए स्ट्रेन 5% से कम है, यहाँ ग्रेटर देन 20% स्ट्रेन रहता है, मतलब जो whatever यहाँ पर 536 डिग्री रहा तो ग्रेटर देन 36 रहना, या 5 लेस देन 25 रहना, ऐसा कुछ डिफरेंसेस है. दैट डिफरेंसेस आई विल एक्सप्लेन. फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में मैं आपको और बताऊंगा बाद में. फिर इसके भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिगर्स है, और कौन से टाइप के कंडीशन के लिए कौन सा फेल्यूर होता, दिस आल्सो आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, आई होप थिंग्स आर वेरी मच क्लियर विथ यू नाउ. सो आई विल स्टॉप हियर. सो नेक्स्ट क्लास विल बी टेकन बाय मैडम क्षीरसागर मैडम. सो लेट मी टेक द अटेंडेंस. Amrita Dubal, yes, present. Then Bhagyashri is present. Monal Pawar is also present. Manalili Parekar is present. Pooja Ronge is also present. She came earlier. Prajakta Wagmode is also present. Then Priya Jhande also came. I think she joined and left. Sandeep was also came. Vaibhav I think didn't come today. Mangesh didn't come. Omkar is there. And this Priyanka Mirajkar is also not there. Okay. So have a nice day. Let me stop it here only.